Assalamualaikum everyone. My name is Basma Iqbal and I'm from Fast Nisas Islamabad. Me and my co-partner Fatma Rouge have been working on the semester project for our course called Digital Logic Design, and our project is called Digital Electronic Wiring Tape. Moving onwards to the introduction of our presentation, we will be covering few points throughout this presentation, which includes project overview, components and its usage, simulation and hardware, testing, conclusion, and learning, which will be later on covered by Fatma Rouge. Project overview, we have to understand कि हमारा project actually काम कैसे करता है. It is a very low-cost digital alternative to conventional measuring tapes that uses IR sensing and pulse counting to measure our distance accurately. अब we are using a 3D printed wheel. हम एक wooden wheel भी use कर रहे हैं जो हम आगे discuss करेंगे. And we're using IR LED photodiode, and we're using a pulse generating IC जो 4093 कर रही है और 40110 कर रही है, और वो digitally display होगा हमारे 7 segments पे. और हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म है वो ये है कि जितने भी पल्सेस जनरेट होंगे IC 4093 से, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील जो हम यूज करेंगे. Moving on to the components of our circuit which are being used together, and I'm going to explain how. So firstly, we're using a 3D printed wheel that I just showed you earlier. अब इनके अक्रॉस जो होल्स हैं, इनके एक एंड पे होगा फोटो डायोड और दूसरे एंड पे होगा इंफ्रारेड एलईडी. फोटो डायोड क्या करेगा, वो इन होल्स के थ्रू हमें पल्स सिग्नल जनरेट करके देगा और वो सीधा हमारी इंफ्रारेड एलईडी में जाएगा. इंफ्रारेड एलईडी सिंपली ये करता है, इट वर्क्स एज अ सेंसर एंड इट सेंड्स इट ऑफ टू 4093 IC. 4093 IC क्या करती है, वो प्रोसेस करती है सिग्नल को जो उसको रिसीव हुआ है, एंड दैट सेंड्स इट ऑफ टू 40110 IC जो हमारा डेकेड काउंटर, एक डेकेड काउंटर की तरह वर्क करे. टिकट काउंटर क्या करे, वो इनकमिंग पल्सेस को इनपुट्स की तरह लेता है और वो उसको सीधा 7 सेगमेंट डिस्प्लेज में भेज देता है, और वो हमारा जो फाइनल पल्स जनरेट हुआ है वो उसको डिजिटली डिस्प्ले करता है. लास्टली हमारे पास रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आ जाते हैं. दे सिंपली वर्क टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर एलईडीज, और वो डिस्प्ले करता है हमारी सारी चीज़ को इफेक्टिवली. Hello everyone, my name is Fatma and let me walk you through our circuit diagram and how it works. Looking at the circuit diagram on the screen, the circuit is divided into 4 stages: scanning, signal, processing, counting, and display. As worked on the scanning and processing stage, we have an IR LED and a photodiode placed on opposite sides of the wheel. The IR LED keeps emitting a beam every time a hole in the wheel passes through. That beam gets cut and that cut is registered as a signal. But that signal on its own is not reliable enough to send to the hunter directly. It is weak and sometimes fast sound. So we use the IC 4093 and on that IC it takes that weak signal and turns into a clean sharp pulse. My part of the Proteus simulation was to make sure that every carry was working properly and that was being correctly displayed to these 7 segment cathodes. Now I will explain the counting and display stage that I worked in this Proteus simulation. Now once the pulse leaves this 4093 IC, वो सीधा इस IC में जाती है जो हमारे पास ticket counters हैं, and it's creating a chain of 4 क्योंकि यहाँ पे I'm using 4 ICs. Now it's a chain क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 10 का pin है, that is a carry pin, and that goes straight into next IC की clock up pin. Each one counts from 0 to 9, and when it hits 9, it receives one more pulse, and then it resets to 0 and passes the carry on to next IC, and this is how we got a 4-digit count over here. Hardware implementation will assemble the complete circuit on a breadboard using an IR LED photodiode IC 4093, IC 40110 counter, and 4 7 segment display. We place the IR LED and photodiode around the 3D printer wheel so that the sensor will detect the hole in the wheel at its rotated. When the wheel moves, the sensor generated pulse which were processed by the IC 4093 and countered by the IC 40110 counter. The hunter value was then displayed on a 7 segment display. We will power the surface using 9-watt batteries and tested it by rolling the wheel on a flat surface. The display updated correctly with the wheel movement, showing that the system was working successfully. जो है हमारे पास सबसे पहले फोटो डायोड सेंसर, जो है हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर, जो हमारे पास 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, आई थिंक 1.5 से हम से हैं, एंड देन दैट पुश बटन, और जो है 4093 IC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फोटोडायोड सेंसर एंड IR सेंसर जो है, इनसे अखराज हम ऐसे जब व्हील रोटेट करेंगे तो हमारा जो होगा इस तरह से हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो नंबर ऑफ काउंट करेगा था हम कितनी दफ़ा हमने इस व्हील से रोटेट किया. ये देखेंगे इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर होल है. जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, और जब जो रेक्टेंगुलर होल ऐसे आएगा लाइक इन दोनों से अखराज ऐसे, मतलब जो
ये एक दोनों को आपस में फेस करेंगे तो जो देखते हैं हमारी यहाँ पर रीडिंग चेंज हो रही है। Let me explain the IC40110 and how it works in our circuit. The IC40110 is a ticket counter IC, which means that it counts from 0 to 9, and it has several important pins that I want to tell you कि ये काम कैसे करते हैं. Starting with clock up, ये हमारे पास clock up pin होती है. तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक पल्स अराइव होगी इस पिन पे, हमारा काउंटर जो है दैट विल इंक्रीमेंट बाय 1. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अकाउंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो पल्स जनरेट होती है यहाँ पे हमारा अकाउंट 3 हो जाता है और एक पल्स आती है तो इट गोज़ टू 4. यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा. सो इन आवर सर्किट ये पिन जो है दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट द IC4093 जो कि ये है. सो एवरी 3 पल्स जो जनरेट होता है और जो IR सेंसर में आता है वो सीधा इसमें जाता है और फिर इसमें जाता है. फिर वी हैव क्लॉक डाउन इस IC में, और क्लॉक डाउन का काम ये है कि जब भी हमारे पास क्लॉक डाउन पिन होती है इट डिक्रीमेंट्स द काउंटर बाय 1 विद एवरी पल्स. बट सिंस हम सिर्फ सर्किट में ऊपर जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग डाउन, तो वी डोंट यूज दिस और हमने सीधा ग्राउंड किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कैरी पिन आती है. अब ये है कि जब हमारे पास काउंटर 0 से लेकर 9 तक वेरी करता है, 9 से आगे ऑब्वियसली नहीं जा सकता क्योंकि ये सिंगल इनपुट है. तो जब ये 9 रीच करेगा और इसको एक कोई पल्स रिसीव होगी तो इट रीसेट्स बैक टू 0 और ये 1 हो जाएगा. अब इसी तरह इसी मैकेनिज्म के तौर पे हमने यहाँ पर चार IC लगाई हुई है. सो एवरी टाइम दिस नंबर एक्सीड्स टू 9, दिस विल बी 0, दिस विल गो 0 से 9 तक आगे वेरी करेगा, मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. नेक्स्ट हमारा बोरो है जो कैरी का ऑपोजिट है, एंड दैट इज़ ओनली एक्टिवेटेड जब हम काउंटिंग डाउनवर्ड्स कर रहे होते हैं. तो जब भी हमारा काउंटर 0 पे जाता है इट रीसेट्स. तो क्योंकि हम इसमें नीचे नहीं जा रहे, ओनली गोइंग अप, द पेन इज़ ग्राउंडेड और ये यूज़ नहीं हो रही हमारे डिज़ाइन में. दिस इज़ अ क्लोजअप शॉट ऑफ आवर यहाँ पे जो हमारे पास लगी हुई है बटन, पुश बटन. एंड गोइंग बैक टू द सर्किट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीसेट पिन है दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर 4 ICs. ये हमारे पास 4 ICs के साथ कनेक्टेड है और क्योंकि इसके अंदर एक रीसेट पिन होती है, सो आई डायरेक्टली कनेक्टेड इट टू दिस. और जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा यहाँ पे जो डिस्प्ले है दैट गोज़ टू 0. In conclusion, we successfully designed and implemented a digital electronics measurement tape using digital logic components. Throughout this project, we learned about the IR sensor interfaces, pulse countering, seven segment displays, circuit simulation, and hardware implementation. This project helped us gain practical experience and better understanding the real world application of digital logic design. Thank you so much.